Mentors, here is a really good news for you all. ZAT का जो आंसर की है वो एक्सेलरा ने रिवाइज कर दिया है. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे 6302611389, ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली यहाँ पे इन लोगों ने ये अभी एक्सेप्ट करा है कि यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स थे और ये रेज हुआ था मेरे ख्याल से स्टूडेंट से ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो आई गॉट दिस स्क्रीनशॉट इन वन ऑफ माई group. One of my students actually shared it. So now XAT has accepted कि ये जो आंसर है वो सही है. So अगर आप यहाँ पे देखोगे earlier they're saying that earlier boxes number 716 contain a total of 133 defective pencils. This was considered as the only correct answer. However, now the following answer has also been found correct, which is boxes number 11 to 16 contain a total of 101 defective pencils. Right. Hence, now here is the good news. Hence, we have decided to award marks to those as well who chose the latter answer. Okay, so guys, again let me read this by the way. Since you chose the latter answer, your QA score and percentile have been revised upwards. You may download the revised ZAT scorecard now. So here is the case. If you have chosen this, मेरे ख्याल से आपने ये query raise करी हो, query raise ना करी हो, अगर आपने ये options mark करे हो तो यार आपको marks मिलते हैं. और एक चीज़ यहाँ पे जो देखने को बहुत अच्छी लग रही है, it's one of the beautiful words out here, which is your percentile have been revised upwards. You know what? I was of the opinion that XAT will never come and say that, you know what, we made a mistake and it's our fault and we're going to rectify that because it's one of the best B schools in the country anyway. But I'm really glad that they accepted the mistake and they're now saying that, okay, we have revised it, and for the fact those who have marked it should be getting the answer and the percentile is not going upward. Guys, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए. Go and check your स्कोर कार्ड. आप देख लेना यार एक बार डाउनलोड करके कि आपका परसेंटाइल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. जो मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने ये शेयर करा था उनका पहले 99.93 था, अब उनका परसेंटाइल चेंज होकर बना है 99.96. सो गाइज दिस इज द गुड न्यूज. आई थिंक वी कैन स्पेंड वेरी वेल. सो गाइज एक बार जाके देख लेना यार, अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेना एंड कमेंट करके बता देना कि आपको चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. अगर कुछ और अपडेट आती है आई विल बी पासिंग दैट टू यू गाइज. सो स्टे ट्यून्ड टू सिटी मेंटर्स. बाय बाय.